Alarming situation of oxygen shortage has been reported in Telangana. There has been shortage in Delhi hospitals and in Bihar hospitals. Shortage of medical O2 in several hospitals across state has left COVID-19 patients gasping for breath. Why are we facing such shortages and what can be the impact? Yeah, absolutely right. If you see the media reports from every state, crisis situation is being reported. Whenever you see in the news, you see most of the time the panic reaction is also there. All the patients actually do not require, it's not more than 10% of the COVID infected patient require oxygen. Even person who are at home quarantine, people are trying to store oxygen cylinders in case of some emergency so that they can give to their family member oxygen. That is also adding the crisis. Already central government has taken some initiatives to improve the supply in the form of diversion. Industrial oxygen usage they have stopped. Even the other tanker, because all these medical gases, they are a specific type of tankers are used to transport oxygen or other medical gases. So now it was there in the news, the government is trying to switch all other medical gases containers also to oxygen to supply the oxygen to various states. So this all this arrangement will take 1 or 2 days or may take 3 days to streamline the oxygen supply. Even if you must have seen the green corridor being produced by the Delhi police and other state police to even there was an incidence of oxygen shortage at Max Hospital in the midnight. And it is through the police green corridor the oxygen could be supplied to these hospitals in Delhi. So in the next 2-3 days time, I think there will be some improvement in the oxygen supply, because this demand is very unprecedented. Nobody could even expected that much will be required, and all various actions taken by the central as well as state government will show the result in a day or two. Dr. Anil, what do you have to Yes, say? yes. What is the situation of doctors here with this shortage and this crisis? महेंद्र यादव हाँ। जी, डॉक्टर साहब आप हिंदी में ही बात करिए, अंशिका जी आप हिंदी में ही बात करिए, बोलिए। जी जी। अभी जैसे कि डॉक्टर काला ने बताया कि हम लोग जो है हमारा जैसे एक नॉर्मली एक घर में एक फर्स्ट एड रखते हैं कि ये मेडिसिन हैं। आज के टाइम में जिनको भी अगर इमीडिएटली पता लगता है कि अगर आरटीपीसीआर रिपोर्ट भी नहीं आई, उनको लगा कि हमें फीवर और इस तरह से है, दे रश फॉर दी, क्योंकि सबसे पैनिक हो चुका है, दे गो फॉर दी इमीडिएटली अरेंजमेंट फॉर द ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और ऑक्सीजन सिलेंडर। तो वो जो है एक जस्ट लाइक एक फर्स्ट एड की तरह दे वांट टू कीप इट होम। तो उसमें एक डिमांड एंड सप्लाई जो गैप हो गया है, दैट इज द मेन थिंग। सपोज और दूसरे जो केसेस जो है डे बाई डे बढ़ रहे हैं, तो हर आदमी को जो पिछला पास्ट हिस्ट्री देख करके उसको लग रहा है कि सबसे पहले हम ऑक्सीजन की सप्लाई को इंश्योर कर लें, दैट वाज दी। तो आई थिंक जो पैनिक हुआ है बिकॉज ऑफ जो गैप बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई जो है होने से। और दूसरा यही है कि जो हमारा एक लिमिटेड हर चीज़ का एक लिमिटेड प्रोडक्शन है, लिमिटेड है, बट अरेंजमेंट होने में थोड़ा सा टेक्स टाइम। तो आई थिंक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस वार फुटिंग पे इस पर वर्क कर रही है और सिचुएशन डेफिनेटली वेरी अर्ली विल इम्प्रूव दैट।